Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to another session on the Vedantu VOS channel. After a long vacation, I'm back, and uh, today we are going to discuss a very important reagent in organic chemistry, which is known as the Gilman's reagent. In the previous session, if you recall, we had discussed about diazomethane, and in continuation, what we would be doing is covering certain specific reagents which are very commonly asked, or their usage is very commonly asked in the JEE advanced examination, in the uh, NSEC, as well as the INCHO examination. So let's start with the discussion on what is Gilman's reagent. To understand what is Gilman's reagent, we first need to understand that what are organometallic compounds. Organometallic compounds are the ones in which we have a carbon metal bond. If you look at a carbon atom and a metal atom which is attached to it, you would find that these elements, so carbon, if is attached to a metal, this metal could be anything. Okay, let's say we have lithium. Let's say for this metal we have lithium, magnesium, and we take zinc, and we take copper. If I look at the electronegativities of these elements, then lithium's electronegativity stands at 1. Magnesium's electronegativity stands at 1.3. Zinc's electronegativity stands at 1.6. And copper's electronegativity stands at 1.8. If you look at carbon's electronegativity and check it with respect to the others, you will find that carbon's electronegativity is very high. It's 2.5. Since carbon's electronegativity is very high, we can say that the bond which is present between carbon and metal is polarized towards carbon. Okay, so if I look at this bond between, so the bond between carbon and metal is polarized towards carbon atom, which means that the carbon metal bond will ensure that the carbon atom has a del minus charge and metal has a del positive charge. Okay, so carbon being the more electronegative element has a greater pull on the shared pair of electrons, and metal has a lesser pull. Therefore, the electrons are more attracted towards carbon. Carbon has more negative charge, or carbon has negative charge, and metal has a positive charge. Comparing this with a situation where carbon is bonded to any halogen, in that what we have is carbon has a del positive charge and halogen has a del negative charge, because all the halogens are more electronegative than carbon, except for iodine, which is slightly more electronegative. But we would say that when we take into consideration all halides or halogen atoms, the bond is polarized towards the halogen. So this situation is pretty different from the situation that we observe over here. And because of which we have a situation where the ionic character of the carbon metal bond starts to depend on the nature of the metal. The ionic character of the carbon metal bond depends on the metal. मतलब मेरा ये कहना है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी मेटल की, ओके, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी मेटल की, उतना कम आयोनिक कैरेक्टर रहेगा बॉन्ड में.
If the electronegativity difference between the two is higher, then there will be a higher ionic character. So ionic character will increase if electronegativity of carbon minus electronegativity of metal increases. If I look at a trend of this ionic character, we would find that the trend looks like this. So it will be potassium. You take potassium, sodium, lithium, then you have magnesium, then aluminium, zinc, and then you have cadmium, and then you have copper. And this is the order of the ionic character of carbon metal bond. ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है कार्बन विथ पोटेशियम, कार्बन विथ सोडियम, कार्बन विथ you can say even lithium, not lithium, carbon with potassium and sodium, ये essentially आयोनिक होते हैं. मतलब अगर कार्बन पोटेशियम और कार्बन सोडियम का बॉन्ड अगर हमें दिखाना है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, कार्बन विथ अ नेगेटिव चार्ज एंड पोटेशियम विथ अ पॉजिटिव चार्ज और सोडियम विथ अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये एसेंशियली एक आयोनिक बॉन्ड जैसा ही बिहेव करता है. ओके, इसीलिए जब हम एसिटिलाइड्स दिखाते हैं, सोडियम एसिटिलाइड और पोटेशियम एसिटिलाइड, तो हम इस तरह से दिखाते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C with negative charge and sodium with a positive charge. So representation exactly इसी तरह का रहता है अगर एसिटिलाइड लिया गया, because the bond is essentially ionic. But if you take lithium, okay, if you take lithium, magnesium, zinc, तो यहां पे काफी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाती है. ओके, तो इनको हम बोल ये सकते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट ही होते हैं. सो इनमें जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इस तरह का रहेगा, डेल माइनस डेल प्लस. ओके, अब हमारे पास जनरली तीन तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं. वन इज एन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, RLI. एक और होता है जो ग्रिग्नेट रिएजेंट है, विच इज नोन टू एवरीवन, RMgX. आप देखो यहां पे R और लिथियम के बीच में मैंने बॉन्ड दिखाया है, R और Mg के बीच में भी मैंने बॉन्ड दिखाया है. ओके, एक और बोलते हैं विच इज नोन एज R2CuLi. R2CuLi is the focus point of today's discussion, क्योंकि R2CuLi is known as dialkyl lithium cuprate, or it is also known as a organocuprate or an organocopper compound. Okay, dialkyl lithium cuprate, और इन्हीं को आज हमें डिस्कस करना है. ठीक है, एक और चीज याद रखिए, as the carbon metal bond becomes more polar, the organometallic compound becomes more reactive. मतलब एसिटिलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा रहेगी. So alkyl sodium, alkyl potassium are very very reactive and are among the strongest bases. So I'm just going to write over here that as ionic character of carbon metal bond increases, reactivity increases. ठीक है, चलिए, let's move on to what are organocuprates. Organocuprates were discovered by a person known as Henry Gilman. Organocuprates were the very first type of compounds which were utilized to prepare a hydrocarbon by binding टू एल्काइल ग्रुप्स. इसको आप कोरेहाउस सिंथेसिस में भी पढ़ते हो.
Corehouse synthesis. So they were the first organometallic compound used in the coupling reaction. Please remember कि जो वर्ड्स रिएक्शन है उसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज नहीं करते हैं. आपने पढ़ा होगा एल्केन्स में वर्ड्स रिएक्शन इस तरह का होता है, RX plus 2Na gives rise to R plus, इसको मैं 2 लिख देता हूं यहाँ पे, 2NaX. ये रिएक्शन दो तरह के मैकेनिज्म से चलता है. एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड अनदर वन इज SN2 टाइप मैकेनिज्म. सो दो प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं, एक फ्री रेडिकल मेथड मैकेनिज्म प्रपोज्ड है और एक SN2 टाइप मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, बट डजंट इन्वॉल्व organometallic compound. Just a moment. ठीक है. सो इसको याद रखिए कि सबसे पहला मेथड जो हाइड्रोकार्बन बनाने का था, जहां पे कि वी हैड टू यूज अ कपलिंग रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्ड द यूसेज ऑफ द डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट्स, और इनको डाइअल्काइल क्यूप्रेट्स भी हम बोल देते हैं. ठीक है. चलो लेट्स डिस्कस हाउ डू वी प्रिपेयर द डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट. सो प्लीज रिमेंबर कि इनको प्रिपेयर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. You do not have to go through a lot of mumbo jumbo. It's a very simple method. So what we do is, so this preparation involves a reaction of alkyl lithium with cuprous iodide. Okay. So let's look at how the reaction takes place. इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2CH3, let's say 2CH3Li मैंने ले लिया, and it is being made to react with CuI in presence of THF, tetrahydrofuran solvent लेते हैं, and it results in the formation of CH3 whole twice CuLi plus lithium iodide बाहर निकल जाता है. इस रिएक्शन को हम ट्रांसमेटलेशन भी बोलते हैं. Why do we call it transmetallation? Because you can see that one metal which is over here, which is lithium, has been replaced by copper. So lithium is replaced by copper. Clear? और ये होता क्यों है? हमेशा याद रखिए कि ट्रांसमेटलेशन तब सक्सेसफुल होगा. So this is successful because electronegativity of copper is higher than that of lithium. मतलब 1.8 रहता है और electronegativity of lithium 1 होती है. ओके. सो आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिया गया तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिप्लेस कर दे रहा है, लेकिन हम उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, इसको हम ट्रांसमेटलेशन बोलते हैं. तो याद रखिए इसको, ये ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन भी है. नाउ हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस? सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं. लिथियम मैकेनिज्म ये होता है LIME which is methyl lithium. It reacts with CuI. अब इसमें जो मिथाइल है, ओके, okay, this methyl, this has del negative, this has del positive, copper has del positive, iodine has del negative. So this breaks over here,
this attacks over here and this goes out. So आपके पास एक मिथाइल कॉपर एंटिटी बन के आ जाता है MECU and you get lithium iodide. Okay, but this is you have used only one equivalent over here. लेकिन यहां पे आपने दो इक्विवेलेंट लिया था, तो सेकंड इक्विवेलेंट का काम क्या होगा? सेकंड इक्विवेलेंट जो है, ओके, सेकंड इक्विवेलेंट LIME, सेकंड इक्विवेलेंट will react with CuMe. Okay, it reacts with CuMe. So in doing so, methyl attacks over here and आपके पास कुछ इस तरह का एक स्पीशीज बन के आ जाता है MECuMe Li, एंड प्लीज रिमेंबर इसमें इस तरह का स्पीशीज होता है जो कि कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन के रहता है. Therefore, if you look at R2CuLi, बुक्स में अगर इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आपने देखा R2CuLi, तो उसमें इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का रहता है R2Cu minus Li plus. Okay, so please to remember that these are the two steps you have utilized, two equivalents, and the reaction takes place like this. It is imperative to know that the reaction very much looks like a substitution reaction, but we will not call it a substitution reaction. We generally do not call it a substitution reaction. Okay, now एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि हम ये डाइथाइल ईथर या फिर THF लेते क्यों है. यहाँ पे आप ET2O भी लेते हो, सो ये डाइथाइल ईथर या ET2O इसलिए लेते हैं सो दैट यहां पे जो मिथाइल लिथियम आपने लिया है ना, दिस मिथाइल लिथियम यूज्ड टू अवॉइड मॉइस्चर और एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ MELI. आप ये बोलोगे कि सर व्हाई नॉट एल्काइल लिथियम. सो इसको हम समझते हैं यहाँ पे कि जो एल्काइल लिथियम है, एल्काइल लिथियम में कॉपर और कार्बन की जो बॉन्ड रहती है, दैट हैज लो आयोनिसिटी. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आयोनिसिटी में सबसे ज्यादा पोटेशियम के साथ था एंड ये डिक्रीज करते करते द लीस्ट आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल and carbon is in organocuprate. So carbon copper bond has low ionicity or the least ionicity in the series that we have seen. Therefore, lithium alkyl cuprates are not readily attacked by weak acids like water and alcohol. मतलब अगर मॉइस्चर रहा तो उसके ऊपर वो अटैक नहीं करेगा. ओके, बट एल्काइल लिथियम कर जाएगा. एल्काइल लिथियम विल डू. So remember that R2CuLi primarily behaves as a nucleophile, or it generates a nucleophilic alkyl group. Okay, it generates a nucleophilic alkyl group. ठीक है, इसमें आप ये भी आप ध्यान रखिए कि when you are showing, okay, so R2CuLi can be conceptualized as RCU dotted lines RLi. मतलब ये जो कार्बन और कॉपर का जो बॉन्ड है, अगर वो ब्रेक किया
तो इस कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज जो कि कॉपर के ऊपर क्रिएटेड था वो आ जाएगा। ओके, R माइनस Li प्लस। सो आप ये सोच के चल सकते हो कि दिस कंपाउंड RCuR Li plus, this has generated something like this. This compound, this bond has broken between carbon and copper, and the negative charge is now present primarily on the carbon atom. This substance reacts primarily with बहुत ही कम तरह के कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं। सो दे रिएक्ट विथ एसिड हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ओके। एल्काइल हैलाइड में भी ये टर्शरी के साथ नहीं करते हैं, नॉट विथ 3 डिग्री Rx. Third, they can react with carbonyl except ketones. मतलब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएंगे बट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। सो इफ आई वेयर टू राइट कि दिस कंपाउंड्स रिएक्ट, किनके साथ वो रिएक्शन नहीं करते हैं, देन इट विल बी they don't react with ketones, esters, nitriles. Okay, so please remember this. एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इवन इपॉक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं ये। ओके, इपॉक्साइड्स इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं कि एक्चुअली वो तो they are highly strained the system and therefore it becomes very difficult for them to sustain that structure under the attack from a particular nucleophilic reagent. Okay, let's start with the discussion around the first type of reaction of organocuprate, which is the coupling reaction. So coupling reaction को हम इस नाम से भी जानते हैं, Corey-House synthesis or Corey-House Posner synthesis. Okay, Corey-House Posner synthesis. Outcome in this R2CuLi reacts with R-X and the product is an alkene. It is used to prepare unsymmetrical alkenes. Unsymmetrical alkenes are ऐसा नहीं है कि इसमें हम symmetrical alkenes नहीं बना सकते हैं, but unsymmetrical. So there are two such reactions that you might have seen. One is Wurtz reaction, one is Corey-House synthesis. Wurtz reaction does not work well for preparation of unsymmetrical alkenes, but Corey-House synthesis works brilliant with Corey-House synthesis works brilliant to prepare unsymmetrical alkene. Okay, so let's look at how the reaction takes place. So reaction कुछ इस तरह का होता है कि R2CuLi reacts with R-X. बहुत सिंपल सा, यहां से एल्काइल ग्रुप इस पे अटैक करता है, X goes out and we get R plus RLi plus CuX. Now please do remember that this reaction follows a SN2 mechanism. Therefore,
works great if this is methyl or 1 degree or 2 degree. Okay. अगर हम 3 डिग्री को लेते हैं, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होती, 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं. Similarly, the leaving group, if is iodine, then so if this X is iodine, the reaction is fastest, followed by bromine, followed by chlorine, followed by fluorine. Okay. Now, if I do this, suppose I take R2CuLi and I react it with HCPH double bond CBrH. अगर मैंने इस कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराया तो ये we have observed that it will displace the bromine and the reaction is highly stereospecific. मतलब जो ओरिएंटेशन है, जैसे कि ये ट्रांस है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी आपको ट्रांस ही मिलता है. Okay, let me write this up. Good. कुछ अच्छी खासी यील्ड 80% से ज्यादा यील्ड पे मिलता है. Okay, so please do remember that if it is a vinyl halide, then they are very unreactive towards SN2 reaction, but over here this reaction, so it is important to know that except for this mechanism, except for this reaction, the dialkyl lithium cuprate, when they react with organic halides, then vinyl and aryl halides are found to be very unreactive towards SN2 reaction, except for this one. Okay, let's move ahead to the next reaction, which is the reaction with epoxide. So reaction with epoxide is again goes by a substitution reaction. So reaction with epoxide followed by acidification gives alcohol. Okay, very simple reaction. कुछ आप इस तरह का ले सकते हो, CH3CH2 whole twice CuLi, and let's say it is being made to react with CH2CH2O. So एक यहाँ पे अटैक करेगा, this will open up, this is first, second, and you will get CH3 CH2 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 O minus Li plus CH3 CH2 Cu, and this upon acidification with dilute H plus dilute acid, you will get a butanol. If there is a आप इसको ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज अ SN2 reaction, the second reaction is a acid base reaction. If there is a unsymmetrical epoxide, तो reaction कुछ इस तरह से होगा. So R2CuLi plus CH3C. So since the reaction follows a SN2 type mechanism,
it will attack at the carbon atom which is less hindered. So ये यहाँ attack करेगा, यहाँ से bond, and you will be getting CH3 CHO minus CH2 R plus RCU, and this will react with H plus to form OH. Perfect. Let's move on to the next one, which is reaction with acid halide. बहुत simple सा reaction है. Acid halide में आपके पास जो substance है वो इस तरह का है. X, where X is chlorine or bromine or iodine, कुछ भी आपने ले लिया, and this is being made to react with some R dash CuLi. What actually happens is SNTH mechanism operates. SNTH is substitution nucleophilic through a tetrahedral intermediate, and you get RC double bond O R dash. The outcome is a ketone. अब ये कीटोन पे जाके ये रिएक्शन रुक जाता है. प्लीज रिमेंबर कि अगर आपने यहाँ पे एक ग्रिग्नर्ड रिएजेंट लिया होता R-MgX, then ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कि अगर आपने 2 इक्विवेलेंट्स लिए हैं तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट रिएक्शन में एंड रिजल्ट कुछ ये बना के आपको देगा. मतलब you will end up getting a 3-degree alcohol. The ketone which is formed intermediately also participates in reaction with Grignard reagent, because Grignard reagents are more reactive than dialkyl lithium cuprate or organocopper compound. So mechanism takes place like this: RC double bond O X plus R dash this attacks over here, this goes like this, so you get a tetrahedral intermediate which looks like this. This is the tetrahedral intermediate. This comes over here, this goes out. You get a ketone. So this ketone doesn't react further because of low reactivity of dialkyl lithium cuprates. Okay? कभी कभार ये पूछा जा सकता है आपसे कि एसाइल हैलाइड्स में ऐसा क्या खास है कि ये रिएक्शन इतना आसानी से हो जाता है. Okay, so why acyl halides or acid halides are so reactive? So you can say that the greater reactivity is because of something like this: RC double bond O Cl Cu R2 Li, and there is a del positive del नेगेटिव, कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है एंड विच एनहांसेस this is responsible for higher reactivity of मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव इस बॉन्ड के हल्के से टूटने के कारण और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने के कारण दैट डेल्टा प्लस इंक्रीजेस, सो ये आर यहाँ वापस यहाँ पे अटैक करता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज रिएक्शन विद कार्बोनिल. हमने अभी तक पढ़ लिया है कि इफ यू टेक अ कीटोन then it will not react. There is
no reaction. But if you take a aldehyde, then ये reaction होता है, because carbon in aldehyde, carbonyl carbon in aldehyde has higher delta positive. So delta positive over here is higher than ketone. And if the reaction over here takes place, it's a typical addition reaction. You'll get O minus, R dash, H, and further acidification will give rise to a 2-degree alcohol. एक काफी इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन इसमें आता है, which is how does a alpha beta unsaturated carbonyl react? Please remember, an alpha beta unsaturated carbonyl can be shown like this. This is the alpha position, this is the beta position. So alpha and beta position के बीच में एक double bond है. And this, if is made to react with R2CuLi, तो ये जो alkyl group होता है, this directly doesn't attack C of C double bond. O उस पर अटैक नहीं करता है. What it does is this. So R2CuLi, this, let's say मैं यहाँ पे नेगेटिव दिखाता हूँ, ये यहाँ अटैक करेगा. This goes over here and this goes over here. So 1, 2, 3 and आपके पास कुछ इस तरह का एक सिचुएशन जनरेट होता है. R O minus. Okay. Li. And then it reacts with H plus, generates an enol. Which tautomerizes to form this compound. Now, if you look at the position where this is getting attached, I can say that in this carbonyl, अगर मैंने इसको position 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, तो alkyl group is coming and attaching itself over here and hydrogen was coming and attaching itself over here. अब देखो यहाँ पे hydrogen attach हो रहा है और यहाँ पे कहीं alkyl group attached है, तो ये 1,4 addition हो रहा है. However, if I do this reaction with Grignard's reagent RMGX, then ये 1,2 addition देगा. 1,2 addition कैसा दिखेगा? H attaching at oxygen and R attaching at the carbonyl carbon, and you will be getting a compound like this. It's a very common question. काफी सारे competition level की problem solving books में, even in a lot of test series and even previously in InChO, this question has been asked around dialkyl lithium cuprates behavior and RMGX's behavior towards alpha beta unsaturated compounds. So please remember that due to the higher percentage covalency of the carbon copper bond in dialkyl lithium cuprates, these are thought of soft nucleophiles. इसको हम soft nucleophile center बोलते हैं. Soft nucleophiles. Soft nucleophiles और soft bases भी बोलते हैं. So soft nucleophilic centers look for soft positively charged centers. एक principle होता है पियर्सन का hard and soft acid base rule. उसका ये कहना है कि
If there is a large positive charge, then it will seek a large negative charge. Or a hard acid will seek a hard base. Soft acid will seek a soft base. So पॉजिटिव चार्ज का अगर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, डी लोकलाइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी प्रेजेंट हो रहा है, सो ये एक हार्ड एसिड है, hard acid site, and this will be a soft acid site. So okay, so this is what happens. So that's all for today. I hope you enjoyed today's session. काफी simple सा compound है, and इसके 4 important reaction जो कि you can find them to be repeated as like Grignard reagent, but सिर्फ 4 reactions आपने इसके जानने हैं. एक कार्बोनिल कंपाउंड स्पेसिफिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक एसिड हैलाइड्स के साथ, एक एपॉक्साइड्स के साथ, एंड एक अल्काइल हैलाइड्स के साथ, जो रिएक्शन करके कोरी हाउस सिंथेसिस के थ्रू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हमें जनरेट करके देता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.